Hello friend. So today we'll be discussing about the mechanical engineering questions in GATE 2025. So we'll start with the thermodynamics questions. पहले हम लोग thermodynamics के question discuss कर लेंगे. Thermodynamics means basic thermodynamics and its application. Applications in IC engine, refrigeration, air conditioning, power plant, and compressible flow. So let us start with the first question. यहाँ पे क्या दिया गया है? थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल इज 0.5. द वैल्यू ऑफ हीट रेशियो ऑफ एयर इज 1.4. द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द साइकिल इज. सो यू हैव टू गिव योर आंसर राउंड अप टू 1 डेसिमल प्लेस. सो दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू आईसी इंजन. यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है. एक है आपका एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज गिवन एज 50% एंड दूसरा स्पेसिफिक हीट रेशियो 1.4. सो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या है आपका 1 - 1 by r to the power k - 1. दिस r is represents the compression ratio and this is the efficiency. तो आप वैल्यू बैठा दीजिए 1 - 1 by r to the power k - 1. k is 1.4. 1.4 minus 1 is 0.4. So 1 - 1 by r to the power 0.4. That will mean r to the power 0.4 equal to 2. R equal to 5.6. So compression ratio is 5.6. Let us go to the next question. In a psychometric chart, one axis represents dry bulb temperature. The axis that is perpendicular to the dry bulb temperature axis represents. तो इसके लिए आपको साइकोमेट्रिक चार्ट जो रेफ्रिजरेशन RAC का पार्ट है आपका, तो आपको वो जानना ज़रूरी है. सो दिस इज़ द साइकोमेट्रिक चार्ट. यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट रिप्रेजेंट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड जो वर्टिकल एक्सिस है दैट रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. व्हाट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? दैट इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर. इसका जो यूनिट है दैट इज डिग्री सेल्सियस. इसका जो यूनिट है दैट इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन kg इन पर kg ऑफ ड्राई एयर. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? द एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक्सिस, दैट इज दिस एक्सिस. ओके, वी हैव टू सिलेक्ट दिस एक्सिस. सो व्हाट इज दिस एक्सिस? दिस इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. तो साइकोमेट्रिक चार्ट में लेट मी टेल सम मोर फीचर्स अबाउट द साइकोमेट्रिक चार्ट. आपका जो ये कर्व्ड लाइन है, so these are the relative humidity lines. These are the relative humidity lines. And ये जो आपका vertical lines है, these are the dry bulb temperature lines. This is the dry bulb temperature. And आपका ये जो inclined line है, these are the wet bulb temperature lines. Okay, so this जो आपका एक्सट्रीम एंड में जो लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. 5 रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है द एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. Answer B. Let us go to the next question. A thermodynamically closed system contains 1 kg of hydrogen. The system undergoes a reversible polytropic process with polytropic index 1.3. The work output during the process is 400 kJ. During the process, hydrogen behaves as an ideal gas with constant specific heat. The absolute value of heat transfer during the process is dash kilojoule. So you have to give your answer round up to 1 decimal place.
तो यहाँ पे आपका मास दिया गया हाइड्रोजन का, द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय द क्लोज सिस्टम वो दिया गया है, दैट इज 400 किलो जूल, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर. This is a polytropic process with polytropic index of 1.3. So these are the given parameters. n equal to 1.3. Okay. आपका स्पेसिफिक हीट जो है दैट इज़ द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv. Cp आपका दिया गया है 14.56 एंड Cv जो दिया गया है आपका 10.4. दैट इज़ and K becomes the ratio of them, that is equal to 1.4. Work done during the polytropic process that is given as 400 kilojoule. So what is the heat transfer during polytropic process? It is the gamma minus n upon gamma minus 1 of polytropic process. ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है आपका? जब आपको थर्मोडायनेमिक्स के मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कैसे ये फॉर्मूला आता है. ये जनरली आपका फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है. इट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. क्यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डब्ल्यू. ओके, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी है आपका सी वी डेल टी, और डब्ल्यू है आपका W इज़ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. Q है आपका हीट एक्सचेंज इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. अब जब ये दोनों को ऐड करोगे तो इट विल कम आउट लाइक दिस. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन. आपको W पॉलीट्रॉपिक दिया गया 400 किलो जूल. आपको पास K है, सॉरी दिस इज द गामा, एब्सेंट गामा, जस्ट दिस इज द K, this is the K. Okay, so let us use the terminology K. K means the ratio of specific heat. Okay, तो आपके पास K है, आपके पास N है एंड W पॉलीट्रॉपिक है. सो यू कैन सिंपली फाइंड आउट द कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है आपका ये फार्मूला से. Q पॉलीट्रॉपिक कितना है आपका 1.4 माइनस 1.3 डिवाइड बाई 1.4 माइनस 1 इंटू 400 किलो जूल. That is 0.1 upon 0.4 to 400 equal to 100 किलोजूल. सो आपका आंसर है Q पॉलीट्रॉपिक इज 100 किलोजूल. यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इट विल बी 100 किलोजूल. दिस द आंसर. ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये अगर आपका क्लोज सिस्टम है जहाँ पे आपका 1 kg ऑफ हाइड्रोजन है. ओके, एंड दिस सिस्टम इज डूइंग वर्क. ओके, तो दिस इज द पॉलीट्रॉपिक वर्क. सपोज इट इज डूइंग इट इज फॉलोइंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड एग्जीक्यूटिंग वर्क. तो दिस वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज मोर देन द हीट. दिस K माइनस n बाई K माइनस 1 जो वैल्यू है आपका, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1. ओके, दिस वैल्यू, दिस इज 0.25. सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1. इसका मतलब आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जितना वर्क डन होता है आपका, सपोज इट इज पॉजिटिव वर्क डन, दिस पॉजिटिव वर्क डन इज मोर देन द हीट दैट इट फ्लोज इन टू द सिस्टम. सो the temperature will always decrease, means work is done at the expense of its internal energy. Okay, so for this question the answer is 100 kilojoule. Let us go to the next question. Air inside a rigid thermally insulated tank undergoes stirring as shown in the figure below. Which one of the following options is correct? Okay, पहले क्या बोला, the enthalpy of the air increases while the entropy of the air remains constant. Both the enthalpy and the entropy of the air remain constant. Both the enthalpy and entropy of air increase. The enthalpy of air decreases while the entropy of air increases. So let us examine these options one by one. This container, okay, this container is rigid and thermally insulated.
तो I'll write down the energy balance for this container. ये जो कंटेनर है आपका एनर्जी, इसका एनर्जी बैलेंस क्या होगा आपका? सिंपल, इट इज़ एनर्जी बैलेंस इज E energy that flows in minus energy that flows out is the change in energy of the system. Okay, now energy that can flow into the system, it can be by three modes. One is the by heat, one is by work input, and another is by mass transfer. When the mass transfers across the boundary of a control volume, suppose this is the control volume, मास जब ट्रांसफ़र करते हैं इसके अंदर देर इज़ ए फ्लो, सो इट कैरीज अलॉन्ग विथ इट एंथैल्पी. सो सिमिलरली व्हेन एनर्जी फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम इट कैन बी बाय थ्री मोड्स. एक है आपका हीट, वर्क डन एंड मास ट्रांसफर. एंड दिस चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट कैन बी बाय चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सिंस देयर इज नो फ्लो, it must be change in internal energy of the system, and change in kinetic energy and change in potential energy. So अभी जो ये कंटेनर दिया गया है हमारे पास, दिस इज थर्मली इंसुलेटेड, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हीट ट्रांसफर. इट मीन्स Q in and Q out is 0. Okay, now there is no mass transfer across the control volume boundary, so this is also 0. There is no change in kinetic and potential energy, so this is 0, this is 0. तो आपका क्या है? वर्क इन, वर्क आउट. Is there any system that is the system doing any work? No, the system is not doing any work, it is a rigid. Okay, so work out is 0. Only work in is there. This ये जो work that is being done on the system, that is the input work. एंड ये कौन कर रहा है? आपका जो स्टीयरर है, जो फैन है, ये आपको वर्क इनपुट दे रहा है. ओके, ये जो आपका जो पार्ट है, this is giving you the work input. So what is the work input? That is the W input, WIN. This is the work input. Okay, so WI input is the change in internal energy of the system. So the internal energy of the system will increase, that is the temperature will increase. The temperature of the system will increase. So if the temperature increases, it means the enthalpy also increases. If we consider the air as an ideal gas, enthalpy also increases. तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल गया, that is the enthalpy of the system increases, or change in enthalpy is greater than 0. अभी let us come to the entropy. Okay, entropy is, we know from the equation, from this equation the change in entropy is so this is the change in entropy. Now you see that the volume of the gas inside remains constant. It means if we consider the ideal gas equation, V1 is equal to V2, means P1 by, sorry, since V1 equal to V2, it means, so I'll write here just, it means P2 upon P1 equal to T2 upon T1. Okay, so these both are equal, this and these are equal. So what is the change in entropy? Change in entropy equal to Cp minus R ln T2 upon T1, since T2 upon T1 equal to P2 upon P1. Now Cp minus R, we know that from the relation Cp minus Cv equal to R. So Cp minus R equal to this value is Cv, that is the specific heated constant volume. Okay, so
T2 upon now T2 by T1. Since the temperature will increase, since the enthalpy increases, internal energy increases, we have already seen that how the temperature is increasing. So if the temperature is increasing, it means T2 upon T1 is greater than 0. So this value is ln T2 upon T1 is greater than 0. It is positive. So change in entropy is greater than 0. Okay. So we have seen that both the enthalpy and the entropy increase. So the correct answer is option C. Let us go to the next question. A heat pump operating in reversed Carnot cycle maintains a steady air temperature of 300 Kelvin inside an auditorium. The heat pump receives heat from the ambient air. The ambient air temperature is 280 Kelvin. Heat loss from the auditorium is 15 kilowatt. The power consumption of the heat pump. So there is a heat pump, and it is a reversible heat pump because it is working on reversed Carnot cycle. Carnot cycle is a reversible cycle. So it works between the temperature limit of 300 Kelvin and 280 Kelvin, and it consumes power. Yes. So this is the reversible heat pump. Okay. So we have to find out what is the power that is being delivered to the heat pump. Okay. So we know that ambient air temperature is at 280 Kelvin, and heat loss from the auditorium is at 300 Kelvin, and the heat loss from the auditorium is 15 kilowatt. So the heat load of this heat pump will be, that is, it has to deliver equivalent amount of 15 kilowatt to the auditorium. तो ये हीट पंप जो डिलीवर करेगा, सपोज इट इज QH, ये QH का वैल्यू आएगा 15 किलोवाट. ना भी हीट पंप का लेट अस फाइंड द कॉप और द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस रिवर्सिबल हीट पंप. सिंस इट इज रिवर्सिबल हीट पंप, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बिकम, it will only depend upon the temperature, and that is equal to desired effect, that is desired, since it is delivering heat to the auditorium, so it is 300 Kelvin upon work done, that is 300 minus 280, 300 upon 20 equal to 15. So this is the coefficient of performance of the heat pump. The coefficient of performance is desired effect upon work done, that is the desired effect upon work done. What is the desired effect? It has to deliver heat load of 15 kilowatt. So desired effect is 15 kilowatt, and work done we have to find out. So work done equal to 1 kilowatt. Okay. So this is your answer. Work input equal to 1 kilowatt. Answer is 1. Okay. So this is the answer. Okay. Let us go to the next question. Let a spherical block of ice at minus 7 degrees Celsius exposed to atmospheric air at 30 degrees Celsius with the gravitational direction as shown in the figure below. What will be the overall direction of airflow in this situation? Okay. Now, since the ice block is at lower temperature of the ice block is minus 7 degree Celsius. Temperature of the ambient is 30 degree Celsius. So the air that will come into contact with the ice block will become cool. Okay, this will cool down. Earlier पहले जो डेंसिटी था एयर का वो था at normal atmospheric pressure equal to ये ambient temp, जब when the temperature ambient temperature is TA, that is TA equal to 30 degrees Celsius. But after coming in contact with the ice block, the temperature of the ambient air drops down. It simply drops down below 30 degrees Celsius. Okay.
So density of the air is PA by rho R. Sorry. RT. Okay. Now see, now this value will remain constant. Atmospheric, since the air is exposed to the atmosphere, it is an open system, so this value will remain constant, and temperature as it goes down, आपका density of the air increases. जैसे air का density increase होगा, it will go down. So the answer is B. Okay. So as the density increases, आपका जो movement of the air is downward. This is the answer. Answer B. Option B. Let us go to the next question. Yes, this is a 2-mark question. Okay. This is related to Rankine cycle. Okay. So the question is, a thermal power plant is running with no heat or degeneration. The specific enthalpy and specific entropy of steam at the turbine inlet are 3344 kilojoule per kg and 6.5 kilojoule per kg Kelvin. The turbine isentropic efficiency is 0.9 and the mass flow rate of the steam at the turbine inlet is 102 kg per second. We have to determine the power output of the turbine. Okay. So these are the properties of the liquid that is given. Okay. The properties is of saturated liquid and saturated vapor at turbine exit pressure. Means this is given at the condenser pressure. Okay. So this is given at the condenser pressure. So let me draw this temperature, entropy. Water is a pure substance. Let us check this. Water is a pure substance. Okay. So for the turbine, so the enthalpy will drop from 0.1 to 0.2. Ideally, it should drop from 0.1 to 0.2. But since there is isentropic efficiency of the turbine is given, okay, isentropic efficiency of the turbine is given, so the actual drop will be this one. Okay. So the actual drop will be this one. This is 2s, this is the 2. Okay. So we have H1, we are given with H1. H1 is given, that is the enthalpy at the turbine inlet. This is the inlet, that is given as 3344 kilojoule per kg. We are given at the entropy at turbine inlet as 6.5 kilojoule per kg Kelvin. Now अभी आप देखिए जैसे आपका एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, एज द मास फ्लो थ्रू द टर्बाइन देयर इज ए एंथैल्पी ड्रॉप. ओके. तो ये जो प्रोसेस है आपका 1 to 2s, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. ओके. 1 to 2s इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. सो S1 जितना है दैट इज इक्वल टू S2s. ओके. तो S1 इक्वल टू S2s दैट इज इक्वल टू 6.5 kilojoule per kg Kelvin. Okay. So S2s equal to 6.5. Now we are given कि हम यहाँ पे जो सैचुरेटेड लिक्विड का जो स्पेसिफिक एंट्रोपी है दैट इज 1.1 एंड सैचुरेटेड वेपर का जो स्पेसिफिक एंट्रोपी है दैट इज 7.6. सो 6.5 equal to X is the quality of steam at 2s. हमको यहाँ पे क्वालिटी चाहिए at 2s बिकॉज यहाँ पे हमको एंथैल्पी एवेलुएट करना है. सो
from this equation x becomes, what is x? X is 0.8307. So what is the enthalpy at point 2s? That is equal to, we are given with the enthalpy of the liquid and enthalpy of the saturated vapor. So enthalpy at 2s equal to, हम लोग लिख सकते हैं इस तरह 2645 माइनस 341. अभी आपको एंथैल्पी एट 2s मिल गया, तो आइसेंट्रोपिक जो एंथैल्पी ड्रॉप है दैट इज इक्वल टू H1 माइनस H2s, 3344 माइनस 2255. दिस इज योर आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप. ओके, नो आपको टरबाइन का आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दिया गया है, दैट इज 0.9 और 90%. सो ये है आपका तो आपको ये वाला पोर्शन दिया गया है दैट इज 1088.9. तो आपका एक्चुअल जो एंथैल्पी ड्रॉप है दैट इज दिस पोर्शन इक्वल टू ये आपका एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप है. सो दिस इज द एक्चुअल वर्क आउटपुट पर kg ऑफ स्टीम. ओके, एक्चुअल वर्क आउटपुट इक्वल टू पर kg ऑफ स्टीम इज 980.17 किलो जूल पर kg. मास फ्लो रेट आपका दिया गया स्टीम का दैट इज इक्वल टू 102. तो पावर आउटपुट आपका टरबाइन इज this is the in kilowatt. Okay, this is the approximately it will be 99.96 megawatt. So answer is 99.96 megawatt. When you round up to 1 decimal place, answer it becomes 100 megawatt. Okay, so इस तरह हमने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के 7 क्वेश्चन गेट में आए कवर कर लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर. अगर आपको इस तरह का वीडियोस और भी पसंद है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू all of you.